Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Dr. Shaheen Pasha is here again to deliver second lecture. Today's lecture is from Unit 1. In this unit, we will study organization with respect to study skills and two other things, and they are time management and self-management. In today's lecture, we will study about organization with respect to study skills. I would like to start this lecture by making one concept clear about this topic. Usually, the word organization is taken from the sense of an organized group of people with a particular purpose, such as a business or government department. But in this course, we will look at it from a different perspective. We will start our learning with a very common word, organize. According to the Cambridge Dictionary, organize means to make arrangements for something to happen. ये लफ्ज़ एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. Organized person. An organized person is able to plan things carefully and keep things tidy. और जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि able to plan things carefully, keep things tidy and work effectively. An organized student always attends class on time, hands in their assignments in time, perform his or her tasks in an organized way, keeps his or her things neat and tidy, वगैरह वगैरह. It's human nature to appreciate and like organized people. आप खुद सोचें, अगर आप organized हैं तो यकीनन अपनी चीज़ों को organize करके रखेंगे. इससे ये फ़ायदा होगा कि इन चीज़ों की तलाश में वक्त ज़ाया नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड लोग अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड लोग अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं. इसकी वजह से इन्हें नुकसानात का खदशा भी कम होता है. ऑर्गेनाइज्ड लोगों के घर हमेशा नीट एंड टाइडी, पुरकशिश और साफ सुथरे होते हैं और वो अपने काम और डेडलाइंस को बड़े मौसर अंदाज में पूरा करते हैं. उम्मीद है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा. इन्हीं ऑर्गेनाइज्ड लोगों की स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी कहते हैं. There is a long list of organizational skills, but I'll mention a few which are very important for all of you. The ability to plan, the ability to manage time, which is called time management also. इनके ऊपर हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी बात भी करते चलते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप के लिए ये स्किल सीखना बहुत ही ज़्यादा अहम है. टाइम की मंसूबाबंदी इस तरह से करें कि आप अपने इसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ सरअंजाम दें जिससे आपकी डेवलपमेंटल स्किल्स के अंदर जो है वो इजाफा हो. The next one is the ability to schedule tasks. Scheduling, तरतीब देना, वो सलाहियत है जो आपको इस काबिल बनाती है
کہ آپ اپنے کاموں کو ان کی اہمیت کے مطابق پرفارم کریں. ضروری کام پہلے کریں اور غیر ضروری کام بعد میں. یہ آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ اپنے وسائل بہتر انداز میں جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. The ability to organize resources جو کہ ریسورس مینجمنٹ بھی کہلاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو لوگ اس چیز کے اوپر عبور رکھتے ہیں. اور یہ ریسورس پلاننگ کی منصوبہ بندی ایک بنیادی اور بہت اہم سکل ہے. پلاننگ اس کی کرنا، ریسورسز کو تھوڑے ریسورسز میں زیادہ کام نکال لینا جو ہے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اور اس صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم تھوڑے ریسورسز کو اس طرح سے مینیج کریں، اس طرح سے ہم آرگنائز کریں کہ جو ہے ہم اپنی ضروریات کو کسی نہ کسی طریقے سے فلفل کر لیں. اور آج کل تو بہت ساری آرگنائزیشنز اس کو کسی بھی جاب کے لیے بنیادی شرط جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر capable of managing all the resources in an appropriate way within the given tasks. The ability to set priorities management جو ہے اس کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو کیسے سیٹ کیا جائے. یعنی کہ ہمارے میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا کام بعد میں کرنا ہے، کس کام کی کتنی زیادہ ورتھ ہے جس کو پہلے کرنا ہے، اور جو کام بعد میں کرنے والے ہیں وہ کون سے ہیں. اس چیز کو سیکھنے کے لیے جو ہے پرائیورٹیز کو اور اس چیز کو پرائیورٹائز کرنا کہ میں کس چیز کو پہلے اہمیت دوں اور کس چیز کو بعد میں دوں. نیکسٹ ون از the ability to set targets and goals. آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ٹارگٹس اور گولز سیٹ کر سکیں، جس طرح سے کہ ہر چیز کی گولز تک پہنچنے کے لیے آپ نے جو ٹارگٹ کیا لائف میں، اس کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے: بگننگ، مڈل اینڈ اینڈ. کہ اس کے اندر یہ سیٹ کرنا کہ شروع میں نے کہاں سے فرسٹ سٹیپ میں نے کہاں سے لینا ہے، اس چیز کے اوپر پلان کرنا، ریسورسز اکٹھے کرنا، پری ریکوزٹس کرنا، اور یہ سوچنا کہ میرے اندر وہ کون کون سی صلاحیتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں اور جس کے اوپر میں اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کر سکتا ہوں، اس چیز کو اپنے مقصد تک میں یہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہوں. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ ٹارگٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتے، گول اورینٹیڈ نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ اپنے کسی بھی مقصد کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. اور زندگی میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو میک سم جو ہے ٹارگٹس اینڈ گولز فار یور لائف، فار یور فیوچر. یہ سب پوائنٹ اتنے امپورٹنٹ نظر آ رہے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح سے ہم وہ ایکٹیویٹیز کریں جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنی ایفیشینسی کو شو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی ایفیشینسی کو مینٹین کر سکتے ہیں. ایفیشینسی یا کارکردگی یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام لوگوں اور آرگنائزیشنز میں ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کام بہت اچھی طرح سے کریں اور کچھ کام اتنی اچھی طرح سے نہ کر سکیں، لیکن اصل مزہ تو تبھی ہے نا کہ آپ کی کارکردگی ہمیشہ اچھی رہے. اس سے آپ کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا. The ability to make effect and clear communication. یہ پوائنٹ جو ہے یہ تو ایک
जिसे कहते हैं ना कि एक टारगेटेड पॉइंट है कि अगर आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो आपके अंदर इफेक्टिव और क्लियर कम्युनिकेशन की एबिलिटी जो है वो बिल्टअप करनी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के बहुत से शोबों में मौसर और वाज़ेह कम्युनिकेशन कामयाबी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। इसी तरह डेवलपमेंटल स्किल्स के हसूल और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और बरकरार रखने के लिए भी क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके बरक्स जो है, जो बुरी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में बदमज़गी और फ्रस्ट्रेशन फैलाती है। एक क्लियर और मौसर कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ जो है आपकी कम्युनिकेशन को जो है एक्सचेंज नहीं करती है एक दूसरे के साथ, बल्कि ये कम्युनिकेशन के पीछे जो छुपे हुए जज्बात और आपके इरादे हैं उनको समझने में भी मदद देती है। किसी पैगाम को वाज़ेह तौर पर पहुंचाने के साथ साथ आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि सुनने वाले की क्या ज़रूरियात हैं और जो कुछ कहा जा रहा है सुनने वाला इसका पूरा मफ़हूम भी हासिल कर सकता है, उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड भी कर सकता है कि नहीं। द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली। क्रिएटिव थिंकिंग जो है ये चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखने और मसाइल हल करने के नए नए तरीके तलाश करने की सलाहियत को कहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग जो है हर शख्स के लिए फ़ायदेमंद होती है और इसको हर कोई अप्रिशिएट करता है कि यार इसके कितने वर्सटाइल आइडियाज़ हैं, इसकी थिंकिंग कितनी खूबसूरत है। और यही क्रिएटिविटी जो है वो आपको कामयाबियों की बुलंदियों तक जो है वो ले जाती है। नेक्स्ट वन है जी कि द एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि मिलजुल के काम किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज़्यादा लोग या तंजीमों का, ऑर्गेनाइजेशंस का एक काम को मुकम्मल करने या मकसद के हसूल के लिए मिलकर काम करने को जो है कोलैबोरेशन कहते हैं। आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना सीखें, जिसकी वजह से कि हमारा आपस में ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप जो हैं वो बढ़े। In these points, last but not the least, the ability to cooperate with people. कोलैबोरेशन मिलजुल कर काम करने को कहते हैं, जबकि कोऑपरेशन में लोग एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। मसलन इंफॉर्मेशन शेयर करना। देयर आर नॉट ओनली the organizational skill, there is an exhaustive list of organizational skills. You can search Google to see the most in demand organizational skills. Learning about these skills will enhance your chances of employability and success. अगर आप अपने आप को ज़्यादा मनवाना चाहते हैं, ज़्यादा बताना चाहते हैं कि आपके अंदर ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स या इनमें से कुछ हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होनी चाहिए और जो है एम्प्लॉयमेंट मार्केट किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की जो है वो डिमांड करती है। In 1989, Stephen Covey wrote a very useful self-help book
The 7 Habits of Highly Effective People. The book has sold more than 30 million copies worldwide. He defines effectiveness as the balance of obtaining desirable results with caring for that which produces those results. And these 7 habits, we are going to discuss it in detail, and we are going to see that how it's going to work. As you are looking at this beautiful image of 7 habits, from which the first one is be proactive. It means that don't sit and wait in a reactive mood where you are waiting for problems to happen before taking action. It means that you are in the circle of concern. You must take responsibility for your reaction, take the initiative to respond positively and improve the situation. प्रोएक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज से बड़ी लगन है और आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है और आप किसी भी गैर मुतवक्के वाक़े के होने से पहले इसके बारे में जांच लेते हैं, परख लेते हैं और इसके नुकसानात के बचने के लिए ज़रूरी इक़दामात करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप काम करने से गुरेज़ करने के बजाय काम करने की ज़िम्मेदारी को कबूल करना सीखें। इसके अलावा अपने रद्द अमल को कंट्रोल करना सीखें। मसाइल के बजाय हल करने पर तवज्जो देने की आदत डालें। आप एक खुशकुन और ज़्यादा फ़ाल नुक्ता नज़र को अपनाने की आदत डालें तो आप देखेंगे कि बीइंग अ प्रोएक्टिव मेंबर आप कितने कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। सेकंड हैबिट कितनी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। इट सेज बिगिन विद द एंड इन माइंड कि आपको अपने हर दिन, हर काम या हर मंसूबे को जो आप चाहते हैं और जो आपके जहन में है कि मैंने इस मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है, इस सोच के साथ शुरू करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, आपको क्या अचीव करना है और यही चीज़ है जो आपको कामयाब बना देगी। और आप ये देखेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ कि और फिर दूसरा ये कि what do you have to say about yourself? How do you want to be remembered? कि आप किस तरह से अपने आप को कहलवाना चाहेंगे। Third habit, Steven says that first things first. You must be able to prioritize things in your life. You must understand the difference between what is important and what is urgent. हमेशा ये याद रखें कि आपको किसी भी काम शुरू करने से पहले ये सोचना चाहिए कि कौन सा काम ज़रूरी है और किस काम को पहले करना है। अगर आप अहम काम पहले नहीं करते तो आपको इसका बहुत नुकसान हो सकता है। Think win-win isn't about being nice, nor it is a quick fix technique. It's a character-based code for human interaction and collaboration. Value and respect people and think for mutually beneficial solutions or agreement in your relationships. कहते हैं कि जिंदगी को आप जो है ना एक बाहमी ताउन का मैदान बनाएं, ना कि एक बाहमी मुकाबले का मैदान। अपनी जीत को
ایسا بنائیں جو آپ کی بھی جیت ہو اور دوسروں کی بھی جیت ہو. آپ اپنے دماغ اور دل کو اس طرح کا بنا دیں جو کہ باہمی ایک دوسرے کی جیت کو ہی اصل کامیابی سمجھتا ہو. آپ اپنی عادت بنائیں کہ جس سے آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ کو آپ کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے. جیت کا مطلب باہمی فائدہ اور اطمینان ہونا چاہیے، نہ کہ مقابلہ بازی. پانچویں اسکل ہمارے معاشرے سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. اٹ سیز سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. یعنی کہ یوز ایمپتھیٹک لسننگ ٹو genuinely understand a person, which compels them to reciprocate the listening and take an open mind to be influenced by you. This creates an atmosphere of caring and positive problem solving. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اچھی کمیونیکیشن زندگی کا سب سے اہم ہنر ہے. آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا، آپ نے بولنے کے طریقے سیکھے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے سال ہر سال گزارے، لیکن سننے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے اس کے بارے میں کون سی تربیت حاصل کی ہے جو آپ کو سننے کے قابل بناتی ہو تاکہ آپ واقعی طور پہ دوسرے انسانوں کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ سکیں؟ شاید کوئی بھی نہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. سیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو سمجھنا سیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ دوسروں کے پیغام کو اچھی طرح سمجھنا سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آپ بات کرنے سے پہلے دوسرے کی بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پورے اعتماد ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو. کہ وین یو لسن ٹو ادر، اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کو ویلیو دے رہے ہیں. تو جب آپ کسی کو ویلیو دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی عزت جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو اس لیے کیونکہ listening is the best part for communication. ہائیلی افیکٹو پیپل کی لسٹ میں کھڑے ہونے کا ایک اور بہترین ہیبٹ سینرجائز. You must learn how to combine the strengths of people through positive teamwork so as to achieve goals that no one could have done alone. سینرجی کا مطلب ہے ہم آہنگی. سادے لفظوں میں اس کا مطلب ہے دو ایک سے بہتر ہیں. ہم آہنگی تخلیقی تعاون کی عادت ہے جو ٹیم ورک، کھلی ذہنیت اور پرانے مسائل کے نئے حل تلاش کرنے کا نام ہے. لیکن یہ صرف اپنے طور پہ نہیں ہوتا، یہ ایک عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے لوگ اپنے تمام ذاتی تجربے اور مہارت کو میز پہ رکھ دیتے ہیں لا کے. ایک ساتھ اس طرح کام کرنے سے وہ کہیں بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. مل کر اور باہمی تعاون سے اعتماد کے ساتھ کام کرنے سے ہمیں اپنی چیزیں دریافت کرنے میں مدد ملتی ہے جو ہم اکیلے دریافت ہی نہیں کر سکتے. عقل مند لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایک سے بھلے دو. And the final habit Stephen mentioned here, that sharpen the saw. He has suggested that you must balance
and renew your resources, energy, and health to create sustainable, long-term, effective lifestyle. It primarily emphasizes exercise for physical renewal, good prayer, and good reading for mental renewal. It also mentions service to society for spiritual renewal. भाई इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में है। आप चाहें तो अपने आप को सहल और काहिल पसंद बना लें और ख़ुद को ज़हनी और रूहानी तौर पे बेफ़िक्रा बना लें और अपनी फलाह व बहबूद से बिल्कुल ही गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारते रहें, या फिर आप भरपूर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लें। आपको अपने बारे में फ़ैसला करना होगा। एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग का हामिल होता है। ये हम कब से? शुरू से, पैदाइश से ही सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा करें। इसके साथ साथ नई चीज़ों को सीखा करें, नए चैलेंजेस लिया करें, नए मुकाबलों में जाया करें, ताकि आपको आने वाले मुश्किल वक्तों में चैलेंजों का मुकाबला करने की आदत पड़ जाए। Okay, let's recap today's lecture now. Today we have studied organization in the meaning of organized, that if we are organized then we'll always keep our belongings organized. इससे ये फ़ायदा होगा कि हम अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम और डेडलाइंस को ज़्यादा मौसर अंदाज में पूरा कर सकते हैं. Then we talked about time management. In that we have to plan our time in such a way that we could finish more and more tasks which increase our productivity and efficiency. Then we studied about scheduling. कि scheduling जो है ये सलाहियत है जो आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपने कामों को उनकी अहमियत के मुताबिक परफॉर्म करें। इम्पोर्टेंट काम पहले करें एंड अनइम्पोर्टेंट काम बाद में करें। ये आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपने वसाइल बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। And afterwards we discussed about resource planning. That is a skill which instigates you to think ahead. Nowadays almost all organizations demands this skill on priority basis, कि how much you are strong in planning resources, that how you are going to manage, how you are going to plan your resources to achieve your success. फिर हमने इस पर भी बात की कि ज़िंदगी में अपनी तरजीहात को क्यों सेट किया जाता है. And then we discussed that always set your targets and goals to achieve your dreams on right time. Then we saw that working with efficiencies always been seen in good sense. We need to improve this skill, because in any place or in any organization, wherever you want to excel or wherever you want to prove that you are hardworking, and then your efficiency
tells that how much you are serious towards that work. And then we talked about communication, that we have seen that communication is the basic tool to reach on the heights, to achieve your goals, and to make and maintain good working relationship for achieving productivity. Clear and effective communication is very important. और हमने ये भी डिस्कस किया कि क्लियर एंड मौसर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ मालूमात के तबादले के लिए नहीं होती, बल्कि इस कम्युनिकेशन के पीछे छुपे हुए जज्बात और उसके इरादों को समझने में मदद मिलती है। किसी पैगाम को वाज़ेह तौर पर पहुंचाने के साथ साथ आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि सुनने वाले की क्या ज़रूरियात हैं और जो कुछ कहा जा रहा है सुनने वाला इसका पूरा मफ़हूम हासिल भी कर सकता है कि नहीं। Then we talked about creativity, that how much beneficial it is for our future success. इसके बाद हमने कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन के बारे में बड़ा इन डिटेल डिस्कस किया, एंड वी केम टू नो कि कोलैबोरेशन is a thing where we work together, whereas cooperation is a sportive gesture with each other, that how much you support to each other, that how you share your information, how you cooperate with them, how you support them to accomplish any task. Last but not the least, फिर हमने स्टीफन कोवेज की बुक जो है 7 हैबिट्स ऑफ इफ़ेक्टिव पीपल को इन डिटेल डिस्कस किया, that what are these 7 habits, that being proactive, begin with the end in mind, first things first, think win-win. Number 5 was seek first to understand, then to be understood. Number 6, synergize. And number 7 we discussed in detail, that sharpen the saw. And we have seen all of these 7 habits lead us towards making us a successful and happy man. And अब इन आदतों को अपनाकर कामयाब इंसान बनना या ना बनना ये हमारी जनरेशन के हाथ में. who have read this, and we and I would ask you to try to adapt these 7 habits, which will make you definitely a successful person in your future endeavors. And उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर जो है ये पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल फिर मुलाकात होगी. फॉर एनी क्वेश्चंस related to this lecture, do not hesitate to contact me on Google Classroom. I will reply individually to your queries and questions. Thank you very much.